Shadow of Hot and Cold Wars. Maleeha Lodhi. Published November 21, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. Few G20 summits have taken place in the shadow of a hot and cold war. The conflict in Ukraine and US-China tensions both cast a shadow over the annual meeting of the Group of 20 countries in Bali. President Vladimir Putin didn't attend the summit, where Russia's aggression against Ukraine loomed large on the agenda. Geopolitical tensions unleashed by the conflict as well as its far-reaching fallout on the global economy, including disruption of supply chains and soaring energy and food prices, were top concerns at the summit. Geopolitics dominated the gathering of the world's largest economies. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the summit by video, making an emphatic call for Russia to withdraw its troops and end the war, but rejecting peace proposals that would erode his country's sovereignty, territory, and independence. The joint statement issued at the close of the summit declared that today's era must not be of war and that the use or threat of use of nuclear weapons was inadmissible, a reference to Putin's threat to resort to the nuclear option if the Ukraine crisis escalated. The statement sent an important message to Moscow. But it was the meeting between President Joe Biden and President Xi Jinping on the eve of the summit that was more consequential for international stability, as it indicated a deceleration of tensions between the two global powers. The opening statements by both leaders set a positive tone in their first face-to-face meeting since Biden assumed the presidency. Both pledged to improve relations, which had sunk to a historic low in recent years, raising concerns across the world about the advent of a new Cold War. She told Biden that the world is at an inflection point, which obliged their countries to chart the right course for the relationship and elevate it. The present state of China-US relations, he asserted, was not in the fundamental interests of the two countries and needed to be on a healthy and stable track. Biden said it was critical for the two to work together on urgent and global issues. He later told a press conference that he was not looking for a conflict and that US-China competition had to be managed responsibly to avoid a new Cold War. Both leaders came to this meeting strengthened in their respective positions, Xi after securing an unprecedented third term in power, and Biden after an unexpectedly strong electoral performance by the Democratic Party, which retained control of the Senate in midterm congressional elections. Both leaders have known each other long before they reached the helm of their respective country. That personal factor may have contributed to good atmospherics for the meeting. One outcome of their 3-hour-long parleys was agreement to increase communication between their countries and empower key senior officials to engage on global issues such as food security and climate change. The Biden-Xi meeting on the summit sidelines marked a serious effort to stabilize their turbulent relations. This did not, of course, mean their differences narrowed over the contentious issues and disputes that divide them: Taiwan, trade disputes, technology curbs and military postures. Indeed, both sides once again spelt out their respective red lines on Taiwan. Although Biden reiterated the U.S. commitment to a one-China policy, he sounded a warning over what he described as China's coercive posture on Taiwan, which he claimed posed a threat to stability in the region. President Xi, for his part, welcomed Biden's assurance that Washington did not support Taiwanese independence, but made it clear that Taiwan was a core interest for China and the first red line which must not be crossed in China-US relations. Before their meeting, a spokesman of the Chinese Foreign Ministry, in a tough statement, called on the U.S. to stop fudging, distorting and hollowing out the One China principle and strictly abide by the basic norms of international relations. For Asia-Pacific countries, as indeed for much of the world, the tentative bid to stabilize U.S.-China relations was a welcome development as few, if any, of them want be caught in the crosshairs of a dangerous confrontation. A top American official acknowledged the risk of unmanaged competition descending into conflict was of concern to U.S. allies and partners in the region.
For a global economy in turmoil and struggling with record inflation, an easing of US-China tensions is necessary to counter the blows from the Ukraine conflict and the trade/tech war between the two superpowers. The host of the summit, Indonesia's President Joko Widodo, stated clearly that G20 must be the catalyst for inclusive economic recovery and not divide the world into parts. We must not allow the world to fall into another Cold War. He urged concrete action and collaboration to heal the ailing global economy at a summit whose theme was Recover Together, Recover Stronger. The declaration issued by G20 leaders said the world economy was facing unparalleled multidimensional crises and called for steps to curb inflation, protect the vulnerable, calibrate monetary tightening and avoid high currency volatility. But no plan for global recovery was agreed because the economic interests of its members are so varied. In fact, differences among G20 nations, especially on the war in Ukraine, were laid bare in the leaders' statement issued after the summit. Recognizing that the G20 is not the forum to resolve security issues, the 17-page document acknowledged that there were other views and different assessments of the Ukraine situation and sanctions, even as most members strongly condemned the war in Ukraine. Nevertheless, Russia's aggression against Ukraine was denounced in the strongest of terms, which it said was damaging the global economy, especially by fueling inflation and exacerbating energy and food shortages across the world. While many Western commentators saw the most important outcome of the G20 summit to be Putin's increasing international isolation, the global gathering may well be remembered more for the Biden-Xi meeting on the sidelines, which opened an opportunity to improve US-China relations and move the two global powers toward responsible competition. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, November 21, 2022. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. गर्म और सर्द जंग के साए में G20 के चंद सरबराही इजलास हुए हैं। यूक्रेन में तनाज़ा और अमेरिका चीन कशीदगी दोनों ने बाली में ग्रुप 20 ममालिक के सालाना इजलास पर साया डाला। सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की, जहां यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत एजेंडे में शामिल थी। इस तनाज़ा की वजह से पैदा होने वाले जियोपॉलिटिकल तनाव के साथ साथ आलमी मईशत पर उसके दूर रस असरात, बशमूल सप्लाई चीन में खलल और तवानाई और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों समेत सरबराही इजलास में सरे फहरिस्त खदशात थे। जोग्राफियाई सियासत दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों के इज्तिमा पर हावी थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए सरबराही इजलास से खिताब करते हुए रूस से जोर दिया कि वो अपनी फौजें वापस बुलाए और जंग का खात्मा करे, लेकिन अमन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया जो उनके मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाके और आज़ादी को ख़त्म कर देंगी। सरबराही इजलास के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में ऐलान किया गया है कि आज का दौर जंग का नहीं होना चाहिए और ये कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नाकाबिल कबूल है। यूक्रेन के बहरान में इजाफे की सूरत में जौहरी ऑप्शन का सहारा लेने की पुतिन की धमकी का हवाला देते हुए इस बयान में मॉस्को को एक अहम पैगाम भेजा। लेकिन यह सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात थी, जो बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा नतीजा खेज थी, क्योंकि इससे दोनों आलमी ताकतों के माबैन तनाव में कमी का इशारा मिलता है। बाइडन के ओहदा सदारत संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं के इब्तिदाई बयानात ने उनकी पहली आमने सामने मुलाकात में एक मुस्बत लहजा कायम किया। दोनों ने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का अहद किया, जो हालिया बरसों में तारीखी निचली सतह पर गिर गया था, जिससे एक नई सर्द जंग की आमद के बारे में दुनिया भर में खदशात बढ़ गए। शी जिनपिंग ने बाइडन को बताया कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जिसने अपने ममालिक को पाबंद किया है कि वो ताल्लुकात के लिए सही रास्ता तय करें और इसे बुलंद करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की मौजूदा हालत दोनों ममालिक के बुनियादी मुफाद में नहीं है और इसे सेहतमंद और मुस्तहकम रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बाइडन ने कहा कि दोनों ममालिक के लिए फौरी और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करना अहम है।
बाद अज़ा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो किसी तनाज़े के ख़्वाह नहीं हैं और नई सर्द जंग से बचने के लिए अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाबकत को जिम्मेदारी के साथ संभालना होगा। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मौक़िफ़ को मजबूत किया। इक़्तिदार में गैर मामूली तीसरी मुद्दत हासिल करने के बाद शी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गैर मुतवक्के तौर पर मजबूत इंतखाबी कारकर्दगी के बाद बाइडेन, जिसने वस्त मुद्दती कांग्रेस के इंतखाबात में सेनेट का कंट्रोल बरकरार रखा। दोनों रहनुमा अपने अपने मुल्क की बागडोर संभालने से बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इस ज़ाती इंसर ने मीटिंग के लिए अच्छे माहौल में हिस्सा लिया होगा। उनकी 3 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत का एक नतीजा दोनों ममालिक के दरमियान मुवासलात को बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी और आबोहवा की तब्दीली जैसे आलमी मसाइल पर मशगूल होने के लिए कलीदी सीनियर ओहदेदारों को बाइख्तियार बनाने का मुआहदा था। सरबराही इजलास के मौके पर बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात दोनों ममालिक के कशीदा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की एक संजीदा कोशिश है। यकीनन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके इख्तिलाफात मुतनाज़ा मसाइल और तनाज़ात पर महदूद हो गए हैं जो इन्हें तकसीम करते हैं: ताइवान, तिजारती तनाज़ात, टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां और फौजी पोजीशनें। दर हकीकत दोनों फरीकों ने एक बार फिर ताइवान पर अपनी अपनी सुर्ख लकीरें बयान की। अगरचे बाइडेन ने वन चाइना पॉलिसी के बारे में अमरीकी अज़्म का इआदा किया, लेकिन उन्होंने ताइवान के बारे में चीन के ज़बरदस्ती के मौक़िफ़ के बारे में इंतबा दिया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इससे खित्ते में इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर शी जिनपिंग ने बाइडेन की इस यकीन दहानी का खैर मुकद्दम किया कि वाशिंगटन ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता, लेकिन यह वाज़ेह किया कि ताइवान चीन के लिए बुनियादी मुफाद है और पहली सुर्ख लकीर है जिसे चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में उबूर नहीं किया जाना चाहिए। मुलाकात से कबल चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक सख्त बयान में अमेरिका से मुतालबा किया था कि वो वन चाइना के उसूल को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और खोखला करना बंद करे और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों पर सख्ती से अमल करे। एशिया बहरुल काहिल के ममालिक के लिए, जैसा कि दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की आर्जी कोशिश एक खुश आइंद पेश रफ्त थी, क्योंकि इनमें से बहुत कम, अगर कोई हो, एक खतरनाक महाज आराई के कासबाल में फंसना चाहते हैं। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने तस्लीम किया कि खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों और शराकतदारों के लिए गैर मुनज़्ज़म मुसाबकत के तनाज़ात में तब्दील होने का खतरा तशवीश का बायस है। अफरातफरी और रिकॉर्ड अफरात ज़र के साथ जिदोजहद करने वाली आलमी मईशत के लिए यूक्रेन तनाज़ा और 2 सुपर पावर्स के माबैन तिजारती सेश्टेक जंग के झटकों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और चीन के तनाव में कमी ज़रूरी है। सरबराही इजलास के मेज़बान इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने वाज़ेह तौर पर कहा कि UG20 को जामे माशी बहाली के लिए अतप्रेरुक होना चाहिए और वो दुनिया को हिस्सों में तकसीम न करें। हमें दुनिया को एक और सर्द जंग में नहीं पड़ने देना चाहिए। उन्होंने एक सरबराही इजलास में बीमार आलमी मईशत को ठीक करने के लिए ठोस इक़दामात और ताउन पर जोर दिया, जिसका मौजू था मिलजुल कर सेहतयाब हो जाओ, मजबूत हो जाओ। G20 रहनुमाओं की तरफ से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि आलमी मईशत को बेमिसाल कसीर अलजिहती बहरानों का सामना है और इफ़रात ज़र पर काबू पाने, कमज़ोर अफराद के तहफ़्फ़ुज़, मालियाती सख्ती को कम करने और आला करेंसी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया है। लेकिन आलमी बहाली के लिए किसी भी मंसूबे पर इत्तेफाक नहीं किया गया था, क्योंकि इसके मेंबरों के माशी मुफादात बहुत मुतनव्वे हैं। दर हकीकत G20 ममालिक के माबैन इख्तिलाफात, ख़ास तौर पर यूक्रेन में जंग के बारे में, सरबराही इजलास के बाद जारी होने वाले रहनुमाओं के बयान में बेनकाब हो गए थे। इस बात को तस्लीम करते हुए कि G20 सलामती के मसाइल को हल करने का फोरम नहीं है, 17 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ ने एतराफ़ किया कि यूक्रेन की सूरत हाल और पाबंदियों के बारे में दीगर ख़यालात और मुख्तलिफ जायज़े मौजूद थे, यहाँ तक कि ज़्यादातर अरकान ने यूक्रेन में जंग की सख्त मज़म्मत की। इसके बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत की सख्त तरीन शराइत में मज़म्मत की गई थी, जिसके बारे में उसने कहा था कि वो आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, ख़ास तौर पर इफ़रात ज़र को बढ़ावा देकर और दुनिया भर में तवानाई और खुराक की क़िल्लत को बढ़ाकर। अगरचे बहुत से मग़रिबी मुबस्सरीन ने G20 सरबराही इजलास का सबसे अहम नतीजा प्यूटन की बढ़ती हुई बैन अल-अक़वामी तन्हाई के तौर पर देखा,
लेकिन आलमी इज्तिमा को साइडलाइंस पर बाइडन और शी की मुलाकात के लिए ज्यादा याद किया जा सकता है, जिसने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को बेहतर बनाने और दोनों आलमी ताकतों को जिम्मेदाराना मुसाबकत की तरफ मुंतकिल करने का मौका फराहम किया। मजमून निगार अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 21 नवंबर 2022। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.